the entire market would have gone down with it. So I took that as a very positive sign for stability of flows into Indian markets. Yeah. However, I think the Indian IT services sector is going to face challenges going forward. We are, in fact, many of the major stocks in IT services today were at the 52-week low levels, which shows that investors are not enthused by these developments. They are definitely pulling back, and they're going to wait and watch. I don't think we're going to see a lot of money rush into these low-priced IT services giants. This is going to be, I think, it'll, again, in my opinion, it'll take some time before it stabilizes. So what about selling in the metal stocks? In fact, they corrected after a strong run, tracking a fall in global metal prices as the stronger dollar made commodities costlier as well. Did this also drag the market? If you look at the breadth of the market, so we had weakness in IT sector stocks, we had weakness in metals, we had profit booking in some of the pockets, like textiles, which had really run up in the past 2-3 days. So basically, see, these financial markets are really interconnected. So you have on one spectrum, you have dollar, which becomes stronger in terms of dollar index, and it brings down the entire metal pack. So we saw metal prices come down, we saw precious metals, silver and gold, they started moving in a very volatile manner, and we saw metal stocks also pull back because of the profit booking. So clearly right now the markets are in a very volatile zone. I would not take any particular day's movement as indicative of long-term trend. My sense is that investors right now are living on a day-to-day basis. No, they are going with the market trend on a particular given day, and then they wait for another day, and so consolidation essentially is happening. So carry on. जी मैं बस यही, अभी राजेश ने भी अभी बात की मेटल की, आईटी सेक्टर की, उसी के सिलसिले में टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका मुक्त व्यापार और इंडिया ईयू ट्रेड, इंडिया यूके ट्रेड, और इस बार बजट में भी कपड़ा क्षेत्र के उन्नयन की बात की गई है. तो ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये साल कितनी संभावनाएं लेकर खड़ा नजर आ रहा है आपको? प्राची, देखिए, मुझे लगता है कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा पिछले 7-8 महीनों में सफर किया वो टेक्सटाइल सेक्टर था, और जो सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होगा, सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा यूएस ट्रेड डील से और ईयू ट्रेड डील से, वो भी टेक्सटाइल सेक्टर रहेगा. तो मुझे काफी उम्मीद है कि आने वाले समय में एटलीस्ट टेक्सटाइल सेक्टर की जो प्रदर्शन हम देखेंगे बहुत अच्छा है. कारण यह है कि भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर डिसएडवांटेज में था वीजावी आवर नेबर्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान. बांग्लादेश का तो हमसे कई गुना एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल में, और वो हमसे बहुत छोटा इकोनॉमी है. इसी तरह पाकिस्तान को भी, बिकॉज टैरिफ्स में उनको बेनिफिट होते थे. और जैसे ही ये ट्रेड डील अब साइन हो जाएगी, फॉर्मलाइज हो जाएगी, और उसका असर देखिए ईयू ट्रेड डील को लागू होने में करीब 1 वर्ष लगेगा, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट को रेटिफाई करनी है. लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है वो इमीडिएटली, बिकॉज वहां पर कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है, तो ये जैसे ट्रेड डील इंप्लीमेंट होगी, ये इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे. और टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़े, मुझे लगता है कि इसको बेनिफिट होगा, और वो हम देखेंगे आने वाले समय में. So you mentioned profit booking, you mentioned metal, the way they behaved, the IT, you also mentioned the global cues. The fifth factor that I'm adding to it is the RBI policy jitters and also the expiry volatility. What do you have to say? So, first of all, expiry volatility we saw today. So, one of the reasons contributing to the fall could have been the expiry of Sensex futures today. So, Nifty derivatives expire on Tuesdays, and BSE Sensex derivatives, they expire on Thursdays. So today there was some contribution of that expiry. However, I don't think that is a very big factor. Okay. RBI policy, of course, is a more significant force in the market, and going forward, because we might see RBI easing liquidity. We've seen very tight liquidity conditions in last few months. RBI has been constantly increasing liquidity. So I think that is going to be a major supporting factor for the markets. So you think the sentiments will remain the way they are, and we will remain volatile the way we are? Yes, I think so. And fortunately or unfortunately, I think going forward, markets will remain a bit unsettled for a couple of months, and therefore I think retail investors should be cautious. They should not get carried away by jump in a particular day and then start pouring money into the markets, or get depressed the other day when the markets fall. I think this is a market where you buy on dips, you wait for the prices to come down to correct, and this is a market where you should have your head on your shoulders. This is the ideal way of investment now.
एब्सोल्युटली एंड बट यूजुअली प्राची यू वुड सी पीपल लोग जो है वो एकदम भावुक हो जाते हैं मार्केट बढ़ती है और एकदम भावुकता में वो उनको लगता है कि हम मिस कर देंगे और वो इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्रोताओं, ये तो बात थी घरेलू बाजार की, लेकिन आइए जाने कि एशिया और यूरोप के बाजारों का रुख हालचाल कैसा है। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक लगभग 3.9% गिरा। जापान का निकेई तकनीकी शेयरों की बिकवाली में तेजी आने के कारण लगभग 0.9% नीचे आया और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.6% से अधिक गिर गया। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.2% बढ़ा और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं बात अगर यूरोपीय सूचकांकों की करें तो वहां भी मिला जुला रुख देखने को मिला। फ्रांस का कैक लगभग 0.3% बढ़ा और जर्मनी का डैक्स 0.2% ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% नीचे कारोबार कर रहा था। Major US indices displayed mixed trend yesterday. The Nasdaq Composite Index fell 1.5% and the S&P 500 dropped 0.5% as sell-off in technology stocks weighed on sentiment. Some software stocks also continued to face pressure, extending the decline from the previous trading session. Conversely, the Dow Jones Industrial Average gained over 0.5%. Linked to this is a question that I have, that from a policy standpoint, what further domestic reforms are now critical for India to fully capture the trade deal's upside? Particularly on logistics, compliance, and incentives for exporters. So, Rajesh, a lot of, I think, positive steps have been taken for reforms in the past 1 year to enable us to get the benefit of these FTAs that we have with US, with European Union, with New Zealand, with a whole host of free trade agreements which are being signed. The important part is that while we have these trade agreements happening with global partners, we need to have a strong industrial base in India, which is able to take advantage of this, able to manufacture at competitive prices, export to markets abroad, because otherwise they will be able to access our markets and we won't be able to export. So I think next stage of reforms will actually be manufacturing reforms within India, vis-a-vis all factors of capital like land, capital, labor. We've seen reforms happening. Yes. I'm sure we'll see further reforms in land, which is a major problem for manufacturing, and capital, which is basically money. जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और निर्णायक नीतिगत सुधारों के साथ आत्मविश्वास से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। श्री मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर दे रहे थे। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले 1 वर्ष में भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में हुई तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में देश की विकास दर बहुत अधिक है और मुद्रास्फीति कम है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। So, Puneet, how do you take the confidence that India is expressing to be fully geared for competition at the global stage? Rajesh, I think we have a very good reason to be confident and to look forward to the benefits of these deals happening. And to some extent, I think we should be thankful to President Trump for disrupting the global... we had this system over the last 80 years where there was a multipolar world, a bipolar world or unipolar world. Now, in true sense, I think countries like India, which have a huge potential to grow, we will get an opportunity to enter into these deals. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that the first tranche of the bilateral trade agreement between India and the USA is almost ready. Addressing the media in New Delhi, Mr. Goyal said that India expects to finalize and sign a joint statement between both the countries in about 4 to 5 days.
उस जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर शुरुआत हो जाएगी हम दोनों के बीच में इस समझौते की पहली कड़ी। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है जिसको शायद महीना भर 1.5 महीना लग सकता है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को मिड मार्च तक साइन करने का अंदाजा है। लेकिन 18% जो यूएस टैरिफ्स घटने हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप देकर लगभग 4 से 5 दिनों में हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। India today stated that ensuring the energy security of 1.4 billion Indians is the supreme priority of the government. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this while briefing media in New Delhi this afternoon. The government has stated publicly on several occasions that ensuring the energy security of 1.4 billion Indians is the supreme priority of the government. Diversifying our energy sourcing in keeping with objective market conditions and evolving international dynamics is at the core of our strategy to ensure this. All of India's decisions are taken and will be taken with this in mind. वेनेजुएला के तेल पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि व्यापार और निवेश को सम्मिलित करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला भारत का एक दीर्घकालिक साझेदार रहा है। उन्होंने कहा कि 2019-20 तक भारत के कच्चे तेल के मुख्य स्रोतों वाले देशों में वेनेजुएला रहा है। प्रतिबंधों के बाद इस स्रोत को रोक दिया गया है। प्रतिबंधों को फिर से लागू किए जाने के कारण इस स्रोत को एक बार फिर रोके जाने से पहले 2023-24 में वेनेजुएला से आयात को फिर शुरू किया गया। As far as Venezuela is concerned, it has been a long-standing partner for us in the area of energy, both on the trade side and as also on the investment side. Indian PSUs, they have established partnership with the National Oil Company of Venezuela, PDVSA, and PSUs have maintained presence in the country since 2008. Consistent with our approach to energy security, India remains open to exploring the commercial merits of any crude supply options, including from Venezuela. अमेरिका के शुल्क को लेकर श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की और उनका धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों का निर्यात अमेरिका को 18% के कम शुल्क पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अमरीकी पक्ष ने भी स्पष्ट किया है कि शुल्क की अंतिम सीमा 18% है। पुनीत, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए प्राची, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। उसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ की गई। पहली बात ये कि जो भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं उसके एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि भारत अब रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा और हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, अलग जगह से इंपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए जो बेनिफिशियल है, जो भारत के फायदे में होगा, हम वो काम करेंगे। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट का। दूसरा, जो 18% शुल्क को लेकर जो टैरिफ की बात है उसमें भी कुछ कंफ्यूजन रहा है कि कितना टैरिफ घटेगा। तो सीधा ये बात साफ है कि जो 50% का टैरिफ था वो घट के 18% हो गया। तो दोनों बात एकदम मुझे लगता है बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी गई है। And the Prime Minister specifically mentioned about India's journey towards Viksit Bharat, and he also highlighted the rapid progress that India has made over the years. So perhaps given everything going right for India, hopefully in 2026 we would be inching very confidently towards the goal that we have set for ourselves. So Rajesh, in fact the last 1 year has been very challenging, not only for Indian economy, for the global economy, because of the major disruptions which have happened on geopolitics in terms of critical metals, all kind of trade deals. So I think the fact that India has continued to grow at 7% in the middle of this chaos, I think that gives us confidence that going forward, when things improve or the environment for us improves, we will do even better. And the kind of reforms which have been undertaken by government, they should give us more strength going forward. So, okay. Also, we are going to be signing the free trade agreement with the Gulf Cooperation Council. Now, that's going to be huge as well. Absolutely. I think. And will that address our energy needs? It will. And in fact, with GCC, we have had good relations otherwise. But signing these trade deals cements our position in the global trading order. And
once we get through, we put this whole palette of trade deals on the table, and we have Indian companies manufacturing and exporting to these markets. With the shield that FTAs provide, I think we will do phenomenally well in next 4 to 5 years. Okay. Moving on, External Affairs Minister S. Jaishankar has underlined the challenges of excessive concentration of critical minerals and the importance of de-risking supply chains through structured international cooperation. Addressing the inaugural Critical Minerals Ministerial convened by U.S. Secretary of State Marco Rubio in Washington, D.C. last night, Dr. Jaishankar also conveyed India's support to the Forge initiative on critical minerals. In a social media post, the minister said that in his address, he also highlighted India's efforts towards greater resilience through initiatives including the National Critical Minerals Mission, Rare Earth Corridors, and the Responsible Commerce. His remarks came as U.S. Vice President J.D. Vance invited allies and partners to work together to reshape the global critical minerals market. Vance said modern economies still depended on real things and that critical minerals were as essential as oil and gas. What is very important over here is that India signaled support for Forge initiative on critical minerals at this inaugural meeting, which we just read out for you. How could such a platform change the rules of the game for sharing information, investment and technology among trusted partners? See, Rajesh, what happened was that over the past 2 decades, China very silently built a whole ecosystem where they grabbed the entire critical minerals market in the world. They grabbed the markets, they grabbed the production value chains, supply chains, everything. And then they played this hand in the last 1 year to derive undue benefit for themselves in trade deals with other countries. So I think what is changing is very critical, very important for the global trading order. And honestly, if you ask me, I think China made a mistake by overplaying the hand on the critical minerals market. A new market is now taking shape, and fortunately for us, I think India is a very important part of this new order. So how should India think about beyond this partnership with the US, say with Australia, Africa, Latin America and other parts of Asia, so that its critical mineral strategy is diversified, resilient and not overly dependent on any single geopolitical camp? Absolutely, Rajesh. So that is the whole objective of this grouping which has now been developed, and this single market which is being developed by the US, led by the US. And fortunately, I think we are in a position where we are also consumers of these critical minerals as well as we can be producers. And if you see in the latest budget, government has announced these rare earth mineral corridors, which just underlines the importance that we give to this market. Okay. Moving on, global crude oil prices fell over 1% today after US and Iran agreed to hold talks in Oman tomorrow, easing concerns of a potential military conflict. Brent crude was trading over 1.3% down at $68 and 50 cents per barrel, and WTI crude was also trading over 1.3% down at $64 25 cents per barrel when reports last came in. So there are hopes of prices further softening? I think so, Rajesh. I think we are going to see crude oil prices remain soft in this current range for a foreseeable future. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading nearly 0.8% down at 1,52,400 rupees per 10 grams. Silver was trading over 7.8% down at 2,50,130 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 0.5% गिरकर 1,52,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 7.2% गिरकर 2,49,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। पुनीत, प्राइसेस जो है फिर से गोल्ड के ऊपर नीचे और आज फिर गिरे। देखिए, बाकी इतना वोलेटाइल मार्केट है कि मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और बहुत ही स्पेकुलेटिव मार्केट है। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बाय ऑन द डिप्स हो सकता है, पर डेफिनेटली इसमें ट्रेडिंग करना या शॉर्ट टर्म गेन करने की भावना रखना मुझे लगता है वो हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल पुनीत, कार्यक्रम में आने और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Puneet, for being with us. And before we close, the headlines once again.
Benchmark domestic indices decline over 0.5%. Sensex drops over 500 points. Nifty ends below 25,700. Prime Minister Narendra Modi says India is fully geared for competition at global stage, adds country is marching towards becoming third largest economy with confidence and decisive policy reforms. An India-US joint statement on trade deal expected in next 4 to 5 days, says Union Minister Piyush Goyal. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।